everyone. Now we study some numerical problems, conceptual questions based on motion in 2 dimension and 3 dimension with projectile motion. That's clear. Let's see. At time t equal to 0, small t equal to 0, a particle starts traveling from a height 7 z cap. From a height means z coordinate. तो z coordinate आपका क्या है बेटा? 7 z cap. That's clear. In a plane keeping z coordinate constant at any instant of time, its position along the x cap and y cap directions means x and y directions are defined as 3t and 5t cube. X vector is equal to 3t x cap, y vector is equal to 5t y cap. That's clear. z coordinate तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसके साथ में टाइम तो मेंशन है नहीं. x coordinate and y coordinate from question 3t. x cap means along to x direction, y direction, y coordinate 5t cube y cap. At t equal to 1 second आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा. दैट्स क्लियर. तो पोजीशन यू नो दैट r vector is equal to x vector plus y vector plus z vector. X vector 3t x cap, y vector 5t cube y cap, z vector 7 z cap. X cap, y cap, z cap are unit vectors along to x, y and z directions. That's clear. From basic theory, you know that r vector is equal to x vector plus y vector plus z vector. उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो वेलोसिटी dr vector upon dt differentiate with respect to time. 3 as it is constant value, differentiation of t 1 x cap. 5 as it is differentiation of t cube 3t square y cap. Differentiation of 7 0 because constant quantity. That's clear. Acceleration rate of change of velocity with respect to time. तो देखिए 3 constant, टाइम नहीं है इसके साथ में, डिफरेंशिएशन 0. 15t square, 15t square. That's clear. 15 तो एज इट इज है, डिफरेंशिएशन ऑफ t square 15, differentiation of t square 2t y cap. That's clear. At t is equal to 1 second. Okay beta. Acceleration 30 equal to 1 y cap. So your correct answer, acceleration 30 y cap means alongs to y direction. So 30 y cap. 30 y cap. Your correct option B. 30 y cap. देखो -30 भी दे रखा है. हम अगर ये देखिए मेंस 22 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ही फोकस करके सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को. मैं समझ चुका हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. गॉट इट भैया? ओके, थैंक यू.